today in the case study we have picked Pithoragarh. Pithoragarh is a place in Uttarakhand. This case study is about the depopulation or a migration pattern. Okay, and there are few reasons that are responsible for it. Before starting it, हमेशा की तरह we will see the map of Uttarakhand and some geographical locations. Administratively, they have divided the Uttarakhand into two parts. One part is called as Kumaon and the other is Garhwal. This is the Garhwal part and the eastern part is Kumaon. हरिद्वार यहाँ पे है कहीं, ठीक है. Here we have a Dehradun, ठीक है. Here we have Joshimath, which was in news also for land subsidence, earthquakes and all, landslides. Pithoragarh भी यहीं पे है. The case study that we have to do today, Pithoragarh. And this place, Pithoragarh, is rich in limestone, copper, zinc, lead. ठीक है. It is known for the reserves of minerals. यहाँ पे we have a Nainital. Nainital, there is another famous place or a tourist place, you can say, that is Champavat. Gairsan. Gairsan is also a place where Uttarakhand is trying to have its new capital. यहाँ पे कहीं है, we have a Gairsan. ठीक है. ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं. दूसरा मैप बना देता हूं एक और. कुछ ग्लेशियर्स देख लेते हैं. We have a Satopad glacier here. Satopad glacier. Kedarnath है. We have a Badrinath here. ठीक है. We also have this. Here we have a national park, that is Govind Pashu National Park. This is the Govind Pashu National Park. इधर की बात करूं तो we also have one more biosphere reserve, that is Nanda Devi Biosphere Reserve. काफी बड़ा है ये. It spans across various districts. This is Nanda Devi Biosphere Reserve. In the part of Dehradun, we also have one more national park, that is Rajaji. And some part of Rajaji is also being shared by Saharanpur of Uttar Pradesh. ठीक है. One more we have here close to Nainital, the Jim Corbett National Park. और देहरादून के लिए भी मैं बता दूं, it is also famous for limestone as well as rock phosphate. We also have some passes here. We have one, that is Bana Pass. We have a Niti Pass. We have a Lipu Lake. ठीक है. ये कुछ passes हैं that are important ones. Or we also know that there are Panch Prayags, or the 5 confluences of rivers. वो सारे जो हैं गढ़वाल पार्ट में हैं. 5 confluences are in गढ़वाल पार्ट. और in terms of population की बात करूं, as we are already in this module, तो majority of population that is staying in this area is Bhotias. ठीक है. यहाँ पे we have Bhotias. Maximum population is Bhotias population. Or you can say these are the tribes, local tribes. यहाँ पे close to Dehradun and all, we have Jaunsaris. ठीक है. And the unique feature of Jaunsari is that polyandry is practiced among them. क्या होता है polyandry? Yes, one wife can have more than one husband. Jaunsari, Bhotias, we have Tharus. Tharus यहाँ पे हैं in the plain areas. ये जो part है, the upper part, this is about the Great Himalayas. Great Himalayas का ये. This one, middle part जो है Lesser Himalayas. ठीक है. And here we also have a Nag Tibba. ठीक है. Highest peak of Uttarakhand. उसके बाद this portion, this one is the Shivaliks portion. देहरादून वगैरह है जहां पे, कोटलीदून, देहरादून एंड ऑल, ये शिवालिक्स हैं. यहाँ पे we will say this is the Bhabar region. This is Terai or Terai landscape. Bhabar means the coarse alluvial that is brought by the rivers of Himalayas. The rocks here are porous, enables the percolation of water, while Terai is a marshy land where water table is very high. ठीक है. It is good for cultivation and all. ठीक है. तो इतना ही बहुत है, और तो कुछ है नहीं इसमें. जॉनसारीज आर डन, भोटियास, पासेस आर ओवर, नेशनल पार्क्स भी बताई दिए हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट वंस. नाउ आई एम ड्राइंग अ रीजनल मैप ऑफ पिथौरागढ़. In Pithoragarh, this is Kalapani. Kalapani was also in news last year. Kalapani is a disputed territory between India and Nepal. We have here Milam Glacier.
वी हैव अ मिलाम ग्लेशियर हेयर, वी हैव अ नामिक ग्लेशियर हेयर, और एक रिवर भी जो है निकल रही है मिलाम ग्लेशियर से, दैट इज गौरी गंगा. दिस इज गौरी गंगा रिवर. अनदर रिवर दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नामिक, नामिक इज राम गंगा. ये राम गंगा. ठीक है, दिस इज नामिक ग्लेशियर एंड दिस वन इज मिलाम ग्लेशियर. तो नामिक ग्लेशियर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा. ठीक है, दिस इज राम गंगा, दिस इज गौरी गंगा, एंड देयर इज अनदर रिवर दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस प्लेस, दैट इज काली, रिवर काली. This is on the borders of Uttarakhand as well as Nepal, and it ultimately joins the Gauri Ganga. Further, the Gauri Ganga moves here and it also joins the this Ram Ganga. So this is river Kali. एक और भी है इंपॉर्टेंट अगर बताऊं तो, यहाँ पे वी हैव अ हॉट स्प्रिंग, मड कॉट हॉट स्प्रिंग. ठीक है, एक और भी है दामरा वैली. दामरा वैली was also in news in the October month of 2023. It was in a news because for the very first time snow leopard was spotted here in the last year. That's why it was also in the news. Here we have a Champavat and all. मिलाम ग्लेशियर से ये वाली रिवर गौरी गंगा. ठीक है, दिस इज राम गंगा एंड दिस वन इज काली. ऑल दीज आर मर्जिंग अल्टीमेटली. यस यस, रिवर काली जॉइंस राम गंगा, पर राम गंगा को ज्वाइन नहीं कर रही है, बट दोनों को ही ज्वाइन कर रही है अल्टीमेटली. ठीक है, दिस इज अबाउट द पिथौरागढ़ वेयर पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग एंड दिस डिक्लिनेशन और रिडक्शन, दिस रिडक्शन हैज बीन इन फेजेस. माइग्रेशन हैज बीन टेकन प्लेस इन फेजेस. कई फेज आए यहाँ पे. तो पिथौरागढ़ का पहले तो बता दूं कि दिस इज अ सेंसिटिव एरिया एंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना. ठीक है, लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड चाइना. फर्स्ट जो इंसिडेंट हुआ है, अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग कि द पीपल दैट इज भोटियाज वर द मेजॉरिटी ऑफ ट्राइब्स दैट लिव्स इन दिस प्लेस. दीज भोटियाज वर डिपेंडेंट ऑन अ ट्रेड विद सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत. क्या करते थे? घी, हनी, ग्रेन्स, दे वर ट्रेडिंग विद देम. ठीक है, सो एज टू सस्टेन देयर लाइवलीहुड. बट 1962 में हुआ क्या कि 1962 में यू नो दैट the relation between the India and China strained. ठीक है, उसके बाद they blocked the Lipu Lake Pass, which was a lifeline for them. As this Lipu Lake Pass was blocked, so they didn't have any alternatives to sustain their livelihood. So what they have done? Next step was कि Indian government says कि we are now more concerned about Pithoragarh and this strategically located place, so we are going to acquire the land so that entire area could be turned into cantonment. ठीक है, army related infrastructure could be built here. So they started acquiring the land for Kent area, military infrastructure and all. तो उसमें हुआ क्या? ऑलरेडी पहले उनका ट्रेड वेट बंद हो गया. ठीक है, दूसरी चीज अब लैंड भी चला गया. इट वॉज ग्रैब नहीं कहूंगा, इट वॉज एक्वायर्ड. सो बट गवर्नमेंट वॉज सीरियस दैट दे हैव टू एक्वायर एनी हाउ. तो दे ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंड्स. ये फर्स्ट स्टेज थी व्हेन माइग्रेशन स्टार्टेड. दिस वाज द फर्स्ट फेज, 60s का जो था ये फर्स्ट फेज व्हेन माइग्रेशन स्टार्टेड. नाउ thereafter 1965 and 71, again those years where the war broke out with the neighbors. So government was in search of more soldiers. They want to recruit more soldiers to strengthen their borders. So military recruitment होने लगी. So lot of people who were staying in Pithoragarh, they started preparation for the enrollment in this army camp and all. So lot of people were recruited. And what happened? As the people were recruited, youth was motivated to join the army. So obviously होता है ना एक फैक्टर के, जिनकी फैमिली वहां रह रही है फौजी लोग, तो दे वर सेंडिंग मनी टू देयर फैमिली मेंबर्स. ठीक है, तो उससे क्या हुआ? उससे एक स्पिल ओवर इफेक्ट बन गया. एंटायर पीपल लिविंग इन पिथौरागढ़ स्टार्टेड थिंकिंग यार वी शुड आल्सो जॉइन द आर्मी. बिकॉज एक वक्त में ऐसा भी आया कि 70s के दौर में, 70s 80s में पिथौरागढ़ वाज यूज्ड टू बी कॉल्ड एज मनी ऑर्डर इकोनॉमी.
ठीक है, मनी ऑर्डर इकोनॉमी बोलने लगे इसको कि एंटायर इकोनॉमी इज बीइंग रन ऑन मनी ऑर्डर्स दैट इज बीइंग सेंट बाय देयर सन्स एंड फैमिली मेंबर्स टू सस्टेन। ठीक है, वहां से भी माइग्रेशन होनी शुरू हो गई और माइग्रेशन हुआ। ठीक, सेकेंड फेज ऑफ माइग्रेशन स्टार्टेड इन 90s के एरा में। द रीजन वाज that agriculture started declining because the green revolution and other initiatives that were taken to boost agriculture was mainly confined to the plain area. Hilly area में कुछ इतना कुछ कर नहीं पा रहे थे, mountain farming and all it was not initiated there तब तक। तो agriculture low था, low yield of agriculture, and another thing was disaster induced displacements. Lot of disasters were taking place in form of flood, landslides, ठीक है, जो आज भी हो ही रहे हैं, आज तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, अगेन इन दिस वाज अगेन अ फेज वेयर पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग आउट ऑफ द पिथौरागढ़ इन सर्च ऑफ जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्लेन्स में, कहीं दिल्ली या बड़े शहरों में। और पहाड़ों के लिए एक बात बड़ी फेमस है, ऐसा बोल देते हैं मजाक मजाक में लोग उनको, कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। बिकॉज पानी बह जाता है, जवानी मतलब जो यूथ है वो भी माइग्रेट कर जाता है इन सर्च ऑफ जॉब एंड ऑल। ठीक है, इसको अदर वे में मत लेना जवानी वाले पॉइंट को। ठीक है, दिस वाज द सेकंड फेज व्हेन द आउट माइग्रेशन स्टार्टेड। द रीजन वाज डिजास्टर इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद इस कंडीशन में हुआ क्या, टिल द टाइम, अब तक इंडिविजुअल माइग्रेशन वाज हैपनिंग, मतलब इंडिविजुअल्स मूव कर रहे थे कि मैं जा रहा हूं जॉब ढूंढने, मैं निकल गया फौज को ज्वाइन करने। ठीक है, टिल द टाइम इंडिविजुअल्स वर माइग्रेटिंग आउट ऑफ पिथौरागढ़। ये हो गया इसमें एग्रीकल्चर यील्ड, डिजास्टर इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसका एक इफेक्ट बता दूं कि देयर वाज फेमिनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। देयर वर मोर नंबर ऑफ फीमेल्स लिविंग इन पिथौरागढ़ एज कंपेयर टू द मेल्स। ठीक है, मोर वाज फीमेल्स वर हैंडलिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू हाउस होल्ड एंड ऑल। देन केम द थर्ड फेज। थर्ड फेज में व्हाट हैपेंड के Uttarakhand was created. A new state, Uttarakhand, was created in 2000, and these hilly people have a lot of expectations कि हमारे लिए बहुत कुछ होगा इसमें, but new policies were completely in favor of plain areas. Industrial policy आई, the industrial policy of Uttarakhand, and this industrial policy was completely favorable to the plain areas. Again they were marginalized. ठीक है, it was also favorable to only plain areas. Again they were marginalized and they didn't get anything. Although other factor ये भी है कि why should industry would be show any interest in setting up their entire area, their factories and all in hilly areas, you know ना, because lot of issues are there, logistics, transportation and all, वो सब नहीं बन पाएगा, market is also not there। ठीक है, तो वो वाले फैक्टर था। इस फेज में अर्लियर द इंडिविजुअल्स आर माइग्रेटिंग एंड दिस टाइम एंटायर फैमिलीज, ठीक है, फैमिलीज स्टार्टेड माइग्रेटिंग। नाउ लॉट ऑफ families are moving out of Pithoragarh in search of their income source, job, employment and all. And now most of the villages are reduced to ghost villages. Okay, now the villages are left and they are reduced to ghost villages. But one good thing is that in Pithoragarh, every household have at least one or other member in defense. At least one or two members are in defense in Pithoragarh. In fact, they are saying that 60% of the population or 60% of the household have someone either currently working or he or she might have been retired from those defense services. Okay, so this is the case study that you could use in those questions where they have been asking about depopulation, migration and all. Okay.